Hello, I'm Chinmay, the IT training expert. I have over 13 years of experience to giving a training in the IT field. I work as a technical head at NIIT. Over here, I am giving a training of different IT technology like your Java, Oracle, Android, DevOps, your Moon Stack, which is helping the people to getting a job easily. I giving a training to the corporate world just like a NALCO, Jindal, and railway organizations, which we make the people enabled to go through the IT technology. Now I'm having a chance that to teach you people for the IT application or computer application. IT is having a vast career. Without IT, we cannot think about to go ahead. When you get up early in the morning and you are going to the bed, till that timing it is with you, because without WhatsApp, without Facebook, we cannot live or survive. We exchanging the information through the social networking. It is not like that we're only chit chat or you are chatting with a friend. We're passing the information. We're getting a lot of information from office and your college's note. And in the pandemic also, you are we go through the IT technology. For the online training is so much popular. Nobody is think for that day will come where by sitting our home we're taking the virtual classes. Now it becomes popular. Why earlier for getting the additional training, people are not having any kind of timing, because you the institution colleges they are having some limitation timing to open. But now the digital platform, it is helping you to do and to enhance your knowledge at any time. Means the knowledge with you every time. You just enhance your knowledge by giving your flexible timing. IT is now moving to the artificial intelligence, machine learning, where you can getting your information on the meantime. So previously, just like if you take an example, when you want to getting your account information for from a mobile company, so you are just dialing a number and you are put on the hold, and the customer care is replying you. But now if you want to get what is the data is available and what is the recharge timing, you are moving to the app, and through the app you are getting all the information. So IT and the computer application is used everywhere. You can say it is weather forecasting, traffic signal management, satellite management, and in education part also it is having a vast implementation. Without it we can't survive. So it is a best topic or best subject that I have taken as my passion, and I flawlessly deliver that IT technology from last 13 years. It is helping you to go ahead. So comes to our session. First, we have to start what is computer. The computer word is coming from compute. Okay, the compute mane gana kariba. The from that word the computer has come. ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିନଥିଲା, ତ ଗଣନା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସବୁ ମାଳି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ମାଳି ଥାଏ ଗଣିବା ପାଇଁ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ର ସବୁ ମାଳି ଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ଗଣିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଣନା ମେସିନ୍। ଓକେ, ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍
संगणक यंत्र बोली आमे कहि परिबा ओके so it is a electronic device that manipulate the information or data. It has the ability to store, retrieve and process the data. Manipulation of information आमे जो information daily to daily life रे आमे यूज करूचे स्टोर करूचे कंप्यूटर रे ताको पुणी गेट करूचे किसी हाई लेवल कंप्यूटर अच्छे जोटा कि हमर सेंट्रल डेटाबेस रे में हमर डाटा स्टोर होचे हमर फेसबुक रो इन्फॉर्मेशन हो हमर जीमेल रो इन्फॉर्मेशन हो से गोटे सेंट्रल सर्वर बा सेंट्रल कंप्यूटर रे जाके वैल्यू स्टोर होचे एंड कंप्यूटर थ्रू रे हमें पूरा दुनिया को भी कनेक्टेड कर पाउछे बाय सेंडिंग द ईमेल बाय व्हाट्सएप एंड एबे हमें सब गेमिंग एप्लीकेशन भी हमें जॉइन ही होते पबजी गेम फ्री फायर सो डिफरेंट जगह रे जो पिला माने अछंती तार से भी हमें कनेक्टेड हे पाउछे previously जदि when you are sending the information to one person one location to another location generally we stored or we send the information through the inland letter and through the postcard okay which is taking a minimum 3 to 4 days to reaching to the particular person destination so 3 to 4 days niyati laguta but now sending the message and communicating with other person and communicating through the world it now becomes very easier हमें संगे संगे व्हाट्सएप रे कम्युनिकेशन करि पारुचे वीडियो कॉलिंग करि पारुचे माने पूरा दुनिया को हमें इकट्ठी करि पारुचे बाय यूजिंग ऑफ दिस electronic device it now play the important roles in our life ऑफिस सेक्टर हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो नॉर्मल हमें छोटो दुकान ठारू आरंभ करी हमें जो भी शॉपिंग मॉल भी जीवा तो सबु जगह रे ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ए कंप्यूटर और वर्क इज मैंडेटरी एंड ये भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी छी बिफोर इफ यू going to back in the 90s and you if you compare the 20th century it created a lot of job opportunity different part रे हमें सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कहि परिबा किबा वेदर फोरकास्टिंग भी कहि परिबा ए सब जगह रे हमर कंप्यूटर टा बहुत यूज हो हमर जेतरे बात्या आसे से आगुरु जणी ने से एठी पहुंचिला एठी लैंडफॉल हो दैट इज द वर्क ऑफ कंप्यूटर हमें गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जीवा को चाहू छे तो से भी हमें कंप्यूटर यूज करू एंड टिकट बुकिंग हो रेलवे रिजर्वेशन एयरलाइन रिजर्वेशन so everything is possible through the computer so that it is called as the electronic device which is used to process and retrieve the information you may already know that you can use the computer to type the document हमें official document type करि पाउछे presentation बनै पाउछे नती हमें कोनोसी प्रोडक्ट लॉन्च करिवा and we are giving a report to the organization or management we present it through the PowerPoint presentation next evolution of computer the computer in the form of personal desktop computer laptop tablet have become such an important part of everyday living that it can difficult to remember a time when they did not exist. In reality, computers as they are known and used today are still relatively new ago. It is a modern computer that have had greatest, most profound and effect on the society. The first full-size digital computer in the history was developed in the 1944, called the Mark I. So this computer was used only for calculation and weight is 5 tons. Despite its size, limited ability, it has the first of many that would start the generation of the computer development and growth. So, ebe
आमे डिफरेंट कंप्यूटर सब यूज करूचे, आमे लैपटॉप यूज करूचे, आमे डेस्कटॉप यूज करूचे. सो द साइज आमे कौन करछे ना स्क्रीन घरे कांथरे एलईडी टांगी दउचे तो स्क्रीन साइज भी हमर बहुत फ्लैट हे गलानी. तो आगरो देखि दिबो कंप्यूटर गोटे पछरे गोटे वैक्यूम ट्यूब हे गोटे बड़ा लंबा गोटे बॉक्स होया बारतुला. से बॉक्स टाको टेकी नवा पड़तुला एंड सीपीयू टाको टेकी नेकी जीवा पड़तुला. बट नाउ हमें बैग रे टांगी नहीं पड़ोचे कंप्यूटर. आउरी साइज भी एते कम हे गलानी, खाता बही नेला भया नेकी पड़ोचे नोटबुक. So it is helping you to when the size is reduced, then it is helping you to carry one place to the another place. हमें गोटे place to गोटे place तक नहीं पहुँचे. किंतु कंप्यूटर इवोल्यूशन और मार्केट को आसीबा एते सहज नहीं. 1944 मसीहा रे जतबा कंप्यूटर आसिला तो इट टेक्स वन बिग रूम. यदि हमें कहि परिबा 14 into 16 square feet जगह रे गोटे कंप्यूटर हमर रहो. And the size is 5 ton. Can you imagine 5 ton? We are now carry the computer in the form of a kg, 1 kg, 2 kg between. But 5 ton it is a huge. Means for what carry the computer you require a what a trailer and you require a truck. So you cannot move by alone. हमें एकुडिया तक नहीं की जाय परिबा. और सेते बेले कंप्यूटर टा कोन यूज होता केवल कैलकुलेशन पे यूज होता. जेतरा फास्ट कंप्यूटर आसेला, then if you give the input like for adding the two number 2 plus 5, so what is the result? That is a 7. But it will take the 3 to 4 days to giving you the output. Okay, so is it flexible and it is useful to us? No, because 2 plus 5 easily we can give the answer. But if you give that task to the computer doesn't understand. So that is a what drawback at that timing. But later it is improved. The feature is improved. The size is improved. The processing is improved so that it is giving you the fast result. The computer fast results of the next. We can the fast generation computer are bore little resemblance to the computer of today, either in appearance or performance. The first generation computer took place in the 1940 to 1956. Okay, so in between the timing, the first generation computer has launched. And it was extremely large in the size. The inner working of computer at that timing were unsophisticated. This early machine require magnetic drums for memory and vacuum tubes that work as a switches and amplifier. It has a vacuum tube that are mainly responsible for the large size of the machine and massive amount of heat that they release. This computer produce so much heat that they regularly overheated despite the large cooling unit. First generation computer also use a very basic programming language that is referred to the machine language. So first generation computer, when it comes to the market, it is in the year of 1940 to 1956. So in that timing, the computer is very large in size. That is the one problem. Next is a computer रे कौन होतला ना vacuum tube use करा जाउतला जोटा के made in glass काचरे देरी होतला. And ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ଲଣ୍ଠନଟା ଯଦି ବେଶୀ ଜୋରରେ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଜଳେଇବା ସେ କ'ଣ ହବ କାଚଟା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ଫାଟି ବି ଯାଇପାରେ.
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କାଚ ନଳି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେଟା ଏତେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ସମୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଥିଲା ସେ କାଚ ନଳି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ମାନେ ଏଗେନ୍ ଆମକୁ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପୁଣି କାଚ ନଳି ରିପ୍ଲେସ୍ କର ମେମୋରିଟା ପୁଣି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାର୍ଜ କୁଲିଂ ମେସିନ୍ ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ 5 ଟନ୍ର ଜିନିଷ ଲାର୍ଜ ଇନ୍ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଘର କି ଦୁଇଟା ଘର ସେ ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହେବ ଦେନ୍ କାଚ ଫାଟିଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଲସୋ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କୁଲିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇସବୁ କୁଲର ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇପାରିଲାନି ବଟ୍ आज it is a revolutionary part the computer has that computer is called as the fast generation computer. Then we comes to the second period generation. The period second generation was the form in 1959 to 1965. In this generation the transistor were used that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable, and faster than the fast generation machine. It made up of vacuum tubes. In this generation, magnetic cores were used as a primary memory management. Magnetic tape, magnetic disks are secondary storage device. In this generation, assembly language and high-level programming language like Fortran, COBOL were used. The computer used batch processing and multi-programming operating system. The second generation এটা আমার আসিলা 1959 रो 1965 ভিতরে तो এই जो जगह रे हमें सब ट्रांजिस्टर सब यूज हला ट्रांजिस्टर जेतले यूज हला ता साइज ता ऑटोमेटिक रिड्यूस हला आ मेमोरी मैनेजमेंट पाई हमको बहुत सुविधा हला दैट इज वी हैव प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड एठी ही हमर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो इंट्रोड्यूस हला काहे की इंट्रोड्यूस हला for giving a instruction to the computer we need to provide some kind of instruction हमको किसी instruction दबाको पड़िबो किसी communication करिवाको पड़िबो तो हमें जेमती communication पाई we are using the language we are using a different language but computer doesn't understand any kind of language it is only understand 0 and 1 format that is a byte code then ए बाइट कोड टा जो हमें पास करिबा कंप्यूटर डायरेक्टली हमें बाइट कोड तो मन रखी परिबा नहीं हमें गोटे पर्सन रो नंबर टा हमें स्टोर करछे नेम रे किंतु हमें नंबर टा मेमोराइज करिबा हमें हार्डली दीटा कि तीनटा नंबर मेमोराइज करि परिबा कि मैक्सिमम पांचटा खंडे नंबर मेमोराइज करि परिबा किंतु ताठो अधिक नंबर मेमोराइज करिबा मुश्किल है सेति पे हमें नंबर टा कम करू नेम रे सेव करिबा तो so that for giving an instruction to the computer we require some kind of high level programming language तो से समय जो programming language एबे जंते हमें C C++ Java Python ये सब programming language यूज करते हैं सेटा बड़े Fortran COBOL ये सब language introduce होला मार्केट तो सही language थ्रू रे हमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करले किसी हमें एप्लीकेशन सब डेवलप करले सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे Next, the main feature what is in the second generation are use of transistor. It is reliable comparison to the fast generation computer. Fast generation computer reliable and smaller as compared to the fast generation computer. Generate less that has compared fast generation computer less heat because of एटी वैक्यूम ट्यूब टा हमरा उठी गला जो काचर नळी हमें जो व्यवहार करथले से पळला त हमरा ऑटोमेटिक कहला साइज टा जेहेतु नळी पळला काचर नळीटा जोटा हीट जनरेट करथला तनो आ एते हीट जनरेशन हैला कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होला एंड फास्टर देन द
फास्ट जनरेशन कंप्यूटर टिके फास्ट थिला बट एटा भी बहुत कॉस्टली थिला जो कंप्यूटर सब से समय यूज करा जाउतरा जेमते हमें अबे कंप्यूटर यूज करूचंती लेनोवो डेल एक्सेस तो एठी सेते बेले कंप्यूटर जो थिला एटा होची आईबीएम 1620 आईबीएम 7094 सीडीसी 1604 सीडीसी 3600 यूनिवैक 1108 तो ये सब कंप्यूटर हमें सब से हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमें यूज करूँ then comes to the third generation computer. The third generation computer was formed in between the year 1965 to 1971. The computer of third generation is used integrated circuit in the place of transistor. A single integrated circuit has many transistors, so resistor and capacitor along with the associated circuit. The IC was invented by Jack Kilby. This development made the computer smaller in size, reliable, and efficient. In this generation, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used, and high-level programming language, Fortran, COBOL, Pascal, basic algorithm were used during this generation. A generation computer basically ଆମର ट्रांजिस्टर सब यूज है आईसी सर्किट यूज है तो आईसी सर्किट रे कहले ना थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर सी सब रिप्लेस हे गला जते जो ट्रांजिस्टर सब यूज होतला तारे रिप्लेस हे जिवो तले ऑटोमेटिक मोर कहि गला मो साइज ता भी कमी गला आ साइज ता जते कमी जिवो मो आउरी आईसी सर्किट यूज करके मेमोरी मैनेजमेंट बा प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ता को भी फास्ट कर देबो तो ये सब फास्ट हला परे कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो हमारा प्रोसेसिंग पावर जो आउटपुट हमर बहुत शीघ्र दो नेक्स्ट आर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हला ए जो आईसी सर्किट जते हम यूज करले हमारा साइज टा रिड्यूस हला प्रोसेसिंग पावर टा भी हमारा फास्टर हे गला आ सब हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करले आ गोटे जिनसला योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज परफॉर्म मल्टीटास्किंग माने आगुरु कोन होतला एबे हमें जो कंप्यूटर सब यूज करछे दैट इज मल्टीटास्किंग माने हमें YouTube ओपन करके गीत सुनिबा कंप्यूटर भी काम करि परिबा किंतु आगुरु कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करिवो केवल गोटी काम करि परिबो जे परंत से काम न सरछि आ गोटे एप्लीकेशन ओपन करिया बहुत कष्टकर था तो एटा हमको सपोर्ट कला कोन ना हमें मल्टीटास्किंग को हमें जाई परिबा next what are the features are there the main features of this generation are that is IC circuit is used it is more reliable in comparison to the previous two generation smaller in size generate less heat faster lesser maintenance it is costly also AC is required okay consume lesser electricity supported high level programming language and से समय जो कंपनी सो बात कर दिले IBM 360 series Honeywell 6000 series PDP personal data processor IBM 370 by 168 TDC 316 तो ये सब डिफरेंट कंपनी सब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को मार्केट को सब आने नेक्स्ट हमें मूव करिवा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जोटा कि पीरियड हमें कहिबा 1971 रो 1980 भीतर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चली तो हमें 10 जनरेशन यूज करें the computer of fourth generation use very large scale integration VLSI में थाउजेंड ऑफ जो इंटीग्रेटेड सर्किट से मैंने रिप्लेस हो गले VLSI सर्किट हैविंग अबाउट
5,000 transistor. This fourth generation computer become powerful and compact, reliable and affordable. As a result, the fourth generation computer it also contains the high level programming language. The today that high level programming language we are using, like C, C++, then database also it is supported. Okay, it is more powerful, compact, reliable, affordable, and 5,000 transistor is replacing the one VLSI, so it becomes more powerful. And now it is what user friendly, and people can think about that they have to purchase the computer and use it in their home. So you can say it is a personal computer. PC is coming in this fourth generation computer. Now this computer is generated for the human need. Means normal लोक एबे कंप्यूटर टाको आनिकी निज घरे यूज करि परिबे बिकॉज तार साइज भी छोट हो गला आउ एटा मल्टीटैक्सिंग रहिला आ कॉस्ट भी टिके रिड्यूस होला कारण 5000 ट्रांजिस्टर जगह रे जेता गोटे VLSI यूज करा होछि तो कॉस्टिंग भी मोर कमी दियो तो ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେଇପାରିଲା ଯେ କି ମିନିମମ୍ କିଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିକି କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆଣିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦ ସି ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବେସ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଟୁ ଦ ଏନି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା तापर आमर सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाला प्रथम सी आसला सी प्लस प्लस आसला तापर आमर 1990 बेलू को जावा आसीगला तापर पाइथन से थिला जो पॉपुलर हे पारला नै जावा मार्केट नै चलला अप टू 20th सेंचुरी जाय 20th 2000 पर टू डॉटनेट नेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मार्केट नेला तापर पुणी एबे जावा और पाइथन इट विल मीन द टॉप तो आमे कहिबा को गले कंप्यूटर रो जो नुआ जन्म जोटा है बा नुआ फीचर है जोटा कि समस्त देखी पारे समस्ते सेटा आमे कहि परिबा जे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है फर्स्ट जनरेशन थिला सेकंड जनरेशन थिला थर्ड जनरेशन थिला किंतु सेटा ह्यूमन नीड बा समस्त उपयोगी हो पार नथिला आम यूज पई आसी पार नथिला तो एटा आम यूज पई केते बेला आसिला ना फोर्थ जनरेशन बेलको आसिला तो आमे घरे बसिकी काम करि परिबा कंप्यूटर थ्रू ए कंप्यूटर थ्रू रे आमे बहुत कम भी आम रिड्यूस है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आम निज डॉक्यूमेंट आम ये टाइप करें निजर सब कम करें एबे तो ऑल द थिंग्स आर बिलोंग टू द कंप्यूटराइज माने सब डॉक्यूमेंट हो सब इलेक्ट्रोनिकली जाऊँगी कारण आम लेसर पेपर वर्क करने जाऊे बिलिंग हो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो बेसिस मैंने सपोर्ट करुँच मेल ट्रांजैक्शन आउ ईमेल गोटे एमती मध्यम हो गलानी गोटे डॉक्यूमेंट पठाइबा गोटे लोक को पठाइबा पड़ता से टाइमिंग नौला ए सांगे सांगे मेल लेख डॉक्यूमेंट अटैच कर आम पठे पार्थ सो फास्टर प्रोसेसिंग द इनफॉरमेशन किसी सिग्नेचर दरकार सिग्नेचर कर स्कैन करके पठे दिए तो आमको पर्टिकुलर से जगह को भी जावा दरकार नहीं एते आम डिजिटली एते फास्ट आउ मूव कले एटा हला हमर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर नेक्स्ट आम मूव करवा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रे कौन आसीबो फोर्थ जनरेशन फीचर देखी दबा गोटे हूँ VLSI टेक्नोलॉजी यूज वेरी चीप पोर्टेबल माने आमे गोटे जगह आ गोटे जगह को नहीं पारिबा इट इज यूज ऑफ PC वेरी स्मॉल इन साइज पाइपलाइन प्रोसेसिंग नो AC रिक्वायर्ड एंड बहुत समय जाए तुम कंप्यूटर काम कर पारिबो इंटरनेट ए समय यूज हला आमे थ्रू द वर्ल्ड आमे कनेक्टिविटी करि परिबा डाटा ट्रांसफर करि परिबा से समय जो कंप्यूटर सब आसला DEC डेक 10 स्टार 100 PDP 11 क्रे 1 सुपर कंप्यूटर क्रे X MP सुपर कंप्यूटर ये सब कंप्यूटर कंपनी सब से फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर आसला एबे तो आमे 10th जनरेशन यूज करछे एटा टिके आउरी फास्ट हे गला 1982 टिल डेट आमे कहि परिबा किंतु ता भीतर आमे 10th जनरेशन आसी गले इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम्स ULSI ultra large scale integration technology resulting in the production of microprocessor it is nothing but it is a brain हम ह्यूमन रो जंती ब्रेन रखले हमें काम करि परिबानी कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर होची ब्रेन हमें जतले कंप्यूटर परचेज करिबा तो
सेते बेले आमे पचारिया प्रोसेसर पावर केते ता माइक्रो प्रोसेसर कोन अछि आकु बेस करके आमे कंप्यूटर किनु तर मदरबोर्ड ये कोन रहउछि प्रोसेसर कोन रहउछि तो से प्रोसेसर टा इंट्रोड्यूस हला हमर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तापर हमर कोर 2 डुअल कोर i5 i7 ए सब कंप्यूटर ए सब इंटीग्रेशन रो प्रोसेसर रो कंप्यूटर म मार्केट को आसले तो जेते हाई प्रोसेसर किनिबो सेते शीघ्र हम डेटा प्रोसेसिंग हो कोनसी फाइल ओपन करते फटिन ऊपर हे जाय जेमति कि हमें मोबाइल किनुचे हमें 8 GB रैम दरकार 4 GB रैम दरकार तो सेति के रैम रो खोलले को हबो ना एप्लीकेशन टा ऑटोमेटिक वेरी फास्टली सेटा ओपन हे जाउछ तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रे से कांसेप्ट हमर यूज करा the generation is based upon parallel processing hardware artificial intelligence जोटा कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक जो काम करियो सेटा यूज होचे एठी सी सी प्लस प्लस जावा आसीगला डॉट नेट भी इंट्रोड्यूस हला नेटवर्क एनेबल टेक्नोलॉजी जोटा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जी सब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सब यूज करूचे तो सी एठी इंट्रोड्यूस करेगा डॉट नेट टेक्नोलॉजी fifth generation computer it includes the robotics neural network means you are connecting one computer to with the another computer it is supported the game playing it is having very high graphics supported development of expert system to make the decision of real life situation natural language understanding generation एठी हमें यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज कले डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि बार बार कंप्यूटर को सेम इंस्ट्रक्शन दबा दरकार नहीं थरे कंप्यूटर आमको आइडेंटिफाई कर देले जेंति कि तमे गोटे मोबाइल फोन किनिबो प्रथम प्रथम मोबाइल फोन रो जो कीबोर्ड टच की जतरा प्रेस करू छ तो इट इज कंफ्यूज हमें ए प्रेस करे सेटा बी प्रेस हे जाय केबे ता पर पाखो कीटा प्रेस हे जाय तो एमते किछि दिन गला पर कहू होय ना हम फिंगर टा को से अक्वेंटेड कर दे हमें ए जदी टिके फिंगर टा हमर एपट सेपट होय से पर्टिकुलर लेटर टा हमको से प्रिंट करियो development of artificial intelligence development of natural language processing advance in the superconductor technology then availability of very powerful compact computer at cheaper rates some computer type of this generation are one is desktop another is laptop notebook ultrabook chromebook so these are the things are introduced okay so it's about the generation of computer in the next class we go for the classification and what are the different type of computers are available supercomputer mini computer personal computer our description पढ़िबा और computer classification पढ़िबा okay so eta thila amaro generation of computer mane computer kemti evolution hela first generation ne kona asela second generation ne kona asela third generation fourth generation okay hope you understand this lecture and you enjoyed it thank you